हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम के लिए आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सीखेंगे। स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेइंग, स्टार्टिंग न्यू थिंग इज इजी इन लाइफ बट रीस्टार्टिंग इज डिफिकल्ट। आप हमेशा याद रखो, लाइफ में जब भी हम एक नया थिंग स्टार्ट करते हैं शायद ही वो इजी हो सकता है, लेकिन रीस्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम पोजीशन कंपनी को भी आ सकता है। जब कंपनी लगातार लॉसेस इनकर करता है ईयर बाय ईयर, इफ इट स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेस, इस कंपनी को शायद ही वाइंड अप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, 2021, 22, 23, 24 इस तरह से हर साल कंपनी को लॉस होते जा रहा है। शायद ही 2025 में कंपनी में थिंक टू वाइंड अप इट्स बिजनेस। कंपनी क्या करेगा? अपना बिजनेस वाइंड अप करने का डिसीजन ले सकता है। तब कंपनी शायद एक चांस ले सकता है टू कम बैक इन द मार्केट। करेक्ट? कंपनी क्या करता है? यहाँ पे मार्केट में वापस आने के लिए कोशिश करेगा। ये जो वापस आने के लिए कोशिश करता है उसके लिए कंपनी को अपना बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। जब कंपनी अपने ही बैलेंस शीट को चेंज करता है, अपने ही बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करता है, इसको हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन? रीबिल्ड, अपने ही बैलेंस शीट को फिर से रीबिल्ड करना है। रिकंस्ट्रक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब विद इन द कंपनी के अंदर ही अपने ही खुद के शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, चेंज करना है। ठीक है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे कंपनी वाइंड अप नहीं होता, यहाँ पे कंपनी का सिर्फ शेयर कैपिटल चेंज हो जाता है। क्लियर? सर किस तरह से चेंज हो जाता है वो हम आगे सीखेंगे। Whereas एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे कंपनी वाइंड अप करता है। सो व्हाट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? वाइंडिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज टू अ न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी क्या करता है? अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज न्यू कंपनी को ट्रांसफर करता है और ओल्ड कंपनी यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अमलगमेशन आ जाता है। अमलगमेशन वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रहना चाहिए। ठीक है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सिंस देयर इज अ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इज कवर्ड बाय टू प्रोविजंस, सेक्शन 61 एंड सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो शेयर कैपिटल रिडक्शन का जो प्रोविजंस है सेक्शन 61 एंड सेक्शन 66 में कवर किया है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Whereas जो अमलगमेशन पार्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कवर किया है। ठीक है? सो नाउ सर रिकंस्ट्रक्शन के लिए शेयर कैपिटल किस तरह से चेंज हो जाता है उसको यहाँ पे हम सीखेंगे। पहले देखिए रिकंस्ट्रक्शन से क्या हो जाता है। देखो, कैपिटल रिडक्शन, व्हाट वी हैव टू रिड्यूस? शेयर कैपिटल वी हैव टू रिड्यूस। कैपिटल रिडक्शन देखिए, राइटिंग डाउन ऑफ companies different classes of share capital. What is the different classes of share capital? There may be equity share capital, there may be preference share capital. Okay, to write off accumulated losses. Which losses? सर ये जो लॉस होते जा रहा है ना कंपनी को हर एक साल, वो सब हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। सर क्या सिर्फ लॉसेस राइट ऑफ हो जाता है? नो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ये सब हम राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, रीजंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन। देयर इज ओनली वन रीजन इन फैक्ट, हैवी लॉसेस। ओके, कंपनी को क्या हो जाता है? हैवी लॉसेस हो जाता है। जब हैवी लॉसेस हो जाता है कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। सो बिफोर वाइंडिंग अप कंपनी रीस्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस। ठीक है? वेज ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल है हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? देखिए, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इट वाज गिवन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। क्लियर? रिडक्शन किस तरह से हो जाता है? देयर आर डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन,
issue of new shares. What is first one? Issue of new shares. Assume that already there is 20 lakh share capital in my company. मेरी कंपनी में कितना है शेयर कैपिटल? 20 लाख. I will issue new share capital to the extent of further 10 lakh. इस तरह से हम कैपिटल क्या कर सकते हैं? शेयर कैपिटल चेंज कर सकते हैं. ठीक है. बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स वी कैन अल्टर, वी कैन चेंज शेयर कैपिटल. दिस इज अ फर्स्ट वे. One, consolidation of shares. See, I'll take one example here. There are 10,000 shares of rupees 100 each. How many shares are there? 10,000 shares of rupees 100 each. Now what I will do? I will reduce the number of shares. मैं क्या करूँगा? Number of shares reduce करूँगा. I will make it as 1,000 shares of rupees 1,000 each. So I increase the price of the share. Correct? Number of shares are reduced and face value is increased. It is called as consolidation of shares. This is the second way of alteration of share capital. Third one, subdivision of shares. Okay, in the same example, I will make it as 1 lakh shares of rupees 1 lakh shares of rupees 10 each. करेक्ट. यहां पे कितने थे? 10,000 shares of rupees 100 each. Now 1 lakh shares of rupees 10 each. Here number of shares are increased whereas denomination, that is face value, is reduced. This is called as subdivision of shares. This is the third way. Now fourth one, conversion of shares into stock. शेयर्स को क्या करना है? स्टॉक में कन्वर्ट करना है. देखिए, जब शेयर्स में हम डिस्कस करेंगे, देयर विल बी नंबर ऑफ शेयर्स, देयर विल बी फेस वैल्यू. फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. जब हम स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे शेयर्स नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट आ जाता है. फॉर एग्जांपल there are 20,000 shares of rupees 10 each. 20,000 shares of rupees 10 each. So the total capital will be 2 lakh. Correct? This is share capital. So ये share stock क्या हो जाता है? देखो, share stock directly we say it is 2 lakh rupees. डायरेक्टली भी से इट एज 2 लाख रुपीज. ठीक है. सो ये शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? स्टॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द फोर्थ वे. लास्ट वन, कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स. कंपनी सम पार्ट ऑफ द शेयर्स इट हैज इश्यूड. अगर वहां पे अनइश्यूड शेयर्स है, उसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करना है. देखो, लास्ट सिचुएशन में वी नीड नॉट पास एनी जर्नल एंट्री, लेकिन यहाँ पे जब भी शेयर कैपिटल चेंज हो जाता है, डिनोमिनेशन चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाता है, देन वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. फॉर द लास्ट सिचुएशन वी नीड नॉट पास एनी जर्नल एंट्री. ठीक है. सो दीज आर द 5 वेज ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. यहां पे एक एग्जांपल देखो. अब हम ये सीखेंगे सर कैपिटल रिडक्शन किस तरह से हो जाता है और उससे फायदा क्या है, उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, ये सब हम सीखेंगे. There is a balance sheet, statement of balance sheet. As you know, the first heading, above heading is equity and liabilities, and the second heading is asset. Here, focus on share capital, reserves and surplus, intangible assets. 3 ट्रांजेक्शन्स, मेजॉरिटी हमें 3 ट्रांजेक्शन के ऊपर फोकस करना है. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इंटेंजिबल असेट. Share capital, note number 1, there are 4,000 equity shares of rupees 100 each, the amount is 4 lakh. 2,000 preference shares of rupees 100 each, amount is 2 lakh, the total share capital is 6 lakh. Correct? Then the second one, reserve and surplus, note number 2, there is a profit and loss which is in loss. यहाँ पे है माइनस में अमाउंट. ओके, अमाउंट इज इन नेगेटिव, मतलब
company is in loss. Third one, intangible asset, there is a goodwill of 1 lakh. What is goodwill? It is a reputation of the business, good name of the business. इस कंपनी का गुडविल है 1 लाख रुपीज. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू मतलब कंपनी को क्या करना है. कंपनी को ये जो लॉस है और इसका जो गुडविल है ये दोनों कैंसिल करना है. आराम से जाएंगे यहाँ पे हम हर एक पॉइंट प्रॉपरली सीखेंगे. क्या करना है कंपनी को, अपना जो लॉस है और अपना जो गुडविल है वो दोनों कैंसिल करना है. सर कैंसिल क्यों करना है? क्योंकि कंपनी को वापस मार्केट में आना है. करेक्ट. ठीक है. देखो, अगर मैं ये लॉस और एक गुडविल दोनों ही रख के अगर शेयर होल्डर से वापस फिर से अमाउंट रेज करना चाहूँ, क्या शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? नो, दे विल नॉट इन्वेस्ट. फाइन, माई कंपनी इज इन लॉस. इफ माई कंपनी इज इनकरिंग कंटिन्यूअस लॉसेस देन व्हाई आई नीड गुडविल. अगर मेरा कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस इनकर कर रहा है तो मुझे गुडविल की क्या ज़रूरत है? यस और नो. इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लॉस और ये जो गुडविल है दोनों कैंसिल करना पड़ेगा. क्लियर. तब अगर ये दोनों मुझे कैंसिल करना है, क्या कैंसिल करना है? 1,50,000 एंड 1 लाख, मतलब मुझे टोटल 2,50,000 रुपीज़ कैंसिल करना है. करेक्ट. तो ये जो कैंसिल करना है इसके लिए हमें कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगा. शेयर कैपिटल को क्या करना है? रिड्यूस करना है. किस तरह से? यहाँ पे देखिए, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट इज 4 लाख. करेक्ट. व्हाट आई विल डू, दिस 100 रुपीज आई विल मेक इट एज 50 ईच. 100 रुपीज़ को मैंने क्या किया, फेस वैल्यू ही चेंज किया 50 रुपीज़. सो नाउ 4,000 into 50, the new share capital of equity is 2 lakh. मेरी कंपनी का नया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ? 2 लाख. सिमिलरली 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इसको भी हम करेंगे 50 ईच. करेक्ट. सो नाउ 2,000 into 50, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट इज 1 लाख. द टोटल शेयर कैपिटल इज नाउ 3 लाख. Is that clear? What was the old capital? 6 lakh. From 6 lakh, 3 lakh is reduced and 3 lakh is a new capital. ठीक है. आराम से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये जो 3 लाख रिडक्शन हुआ है from the share capital which is reduced this 3 lakh, I will transfer to a separate account. ये जो रिडक्शन कैपिटल, रिड्यूस्ड कैपिटल है, इसको मैं एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा. दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. इसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. व्हाट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट? द रिड्यूस्ड कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट. क्लियर. नाउ फ्रॉम दिस रिड्यूस्ड कैपिटल आई विल राइट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट. मेरा रिड्यूस्ड कैपिटल कितना है? 3 लाख. फ्रॉम 3 लाख आई विल राइट ऑफ 2,50,000. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर रिड्यूस्ड कैपिटल इज 3 लाख and 2,50,000 is written off, there is still remaining 50,000. 3 लाख में से अगर आप 2,50,000 माइनस करोगे, हमारे पास फिर भी 50,000 बचेगा. सर क्या हम इसको वापस शेयर होल्डर्स को देंगे? नहीं. ये जो 50,000 बचेगा उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में एज कैपिटल रिजर्व लिखेंगे. क्या लिखेंगे यहाँ पे? एज कैपिटल रिजर्व 50,000. व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट्स राइट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. इज दैट क्लियर? गुड. नाउ व्हाट इज द पोजीशन? आवर न्यू शेयर कैपिटल इज 3 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस व्हिच वाज इन लॉस ऑफ 1,50,000, नाउ इट इज 50,000. क्लियर. नो चेंज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, नो चेंज इन प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल इज नील. करेक्ट. नो चेंज इन कैश इन हैंड. यस और नो? थोड़ा यहाँ पे अमाउंट्स चेंज करेंगे हम. देखो ये जो है ये 3 लाख है. ओके. थोड़ा रेफर करो, ये शायद ही कंफ्यूज हो सकता है. मैं प्रॉपरली लिखूंगा एक बार फिर से. आवर न्यू शेयर कैपिटल इज 3 लाख एज पर नोट 1. रिजर्व्स एंड सरप्लस अमाउंट इज 50,000 बिकॉज ऑफ कैपिटल रिजर्व. सन्ड्री क्रेडिटर्स नो चेंज. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 3 लाख
प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, माई टोटल liabilities, equity and liabilities now 5 lakh. Correct? What about balance sheet? No change in tangible asset. Intangible is completely written off. Intangible क्या हुआ? पूरा written off हुआ. And there is no change in cash in hand. That is cash and cash equivalent में कुछ भी change नहीं है. So 3,50,000 plus 1,50,000, asset side total is also 5 lakh rupees. Correct? So balance sheet is now tallied. अंडरस्टूड? इस तरह से हमें क्या करना है, हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, राइट ऑफ कर दो. अब देखिए, कोई भी अगर इस बैलेंस शीट को देखेगा उसको वहाँ पे नेगेटिव अमाउंट नहीं दिखेगा, उसको वहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स नहीं दिखेगा. शायद ही शेयर होल्डर अब इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकता है. क्लियर? दिस इज अवर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्टिंग अवर बैलेंस शीट. ठीक है सर, क्या सिर्फ इतना ही चेंज कर सकते हैं हर बार? नो, वी कैन मेक अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. अगर है पॉसिबल, कंपनी थोड़ा और भी साउंड है, ओके, कंपनी के पास कैपेसिटी है, देन इट कैन इशू न्यू शेयर्स. जैसे हम यहाँ पे 5 वेज डिस्कस किए थे, इसमें कौन सा भी वो यूज़ कर सकता है. इट कैन चेंज द प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट. कुछ भी चेंज करना है यहाँ पे, लेकिन कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट important point, when we write the new balance sheet, जब हम न्यू बैलेंस शीट लिखेंगे, हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा and reduced. What we have to write? And reduced. Clear? When after reconstruction, when we write our new balance sheet, here we should write statement of balance sheet into bracket in inverted comma में and reduced लिखना पड़ेगा. सर ये क्यों? दिस इज अ रूल ऑफ ट्रिब्यूनल. दिस इज अ रूल ऑफ व्हाट? ट्रिब्यूनल. सर ये ट्रिब्यूनल कहाँ पे आ गया बीच में? व्हाट इज ट्रिब्यूनल? इट इज कोर्ट ऑफ अ कंपनीज. क्लियर? ये ट्रिब्यूनल कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, शेयर कैपिटल जब भी रिड्यूस हो जाता है, व्हेनेवर देयर इज रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ट्रिब्यूनल. जब ट्रिब्यूनल परमिशन देता है तब ही हम क्या कर सकते हैं, ये सब चेंज कर सकते हैं. तो तब क्या करता है ट्रिब्यूनल? कंपनी को ऑर्डर करता है दैट यू शुड राइट एंड रिड्यूस्ड वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर बैलेंस शीट नेम फॉर 5 years. कितने साल तक? 5 साल तक हमें ये एंड रिड्यूस्ड लिखना ही पड़ेगा. सर क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा इस कंपनी में, उसको पता चलना चाहिए दिस बैलेंस शीट इज रिकंस्ट्रक्टेड. जो न्यू शेयर होल्डर है, जो रीडर्स ऑफ द बैलेंस शीट है, उनको पता चलना चाहिए दैट दिस इज रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी विल कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम मेन पॉइंट में आ जाएंगे. देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड अमाउंट था 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड अमाउंट था 2 लाख. इट मीन जब मैं कंपनी स्टार्ट किया था, इक्विटी शेयर होल्डर से 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 2 लाख लिया था. करेक्ट? अब उनका कैपिटल में क्या किया? 2 लाख और 1 लाख में रिड्यूस किया. इज दैट क्लियर? अगर आप मुझे 6 लाख दोगे, आपका अमाउंट में 3 लाख करूंगा, क्या आप इजीली अग्री हो जाओगे? ऑब्वियसली नो. यू विल से सर हमारा कैपिटल क्यों रिड्यूस करोगे आप? इट इज लॉस फॉर अस. ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का एक क्वेश्चन आएगा ही. हम 6 लाख देते, आप इसको 3 लाख क्यों करोगे? यस और नो? अब मेरा आंसर देखो, मतलब कंपनी क्या रिप्लाई करेगा? बॉस, अगर आप रिड्यूस नहीं करोगे अपना शेयर कैपिटल, आप रिड्यूस नहीं करोगे तो मुझे हर हाल अपनी कंपनी आज ही बंद करना पड़ेगा. अगर आप अपना शेयर कैपिटल रिडक्शन नहीं करोगे, मेरा कंपनी आज ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना लॉस राइट ऑफ नहीं कर सकता मैं. ओके, कंपनी अपना लॉसेस राइट ऑफ नहीं कर सकता, कंपनी अपना इनटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ नहीं कर सकता. इसलिए हम शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज बॉस आप क्या कर दो? रिड्यूस कर दो. क्लियर? अगर आप आंसर देखो, अगर आप रिड्यूस करोगे, मैं लॉस और इनटेंजिबल असेट्स जो भी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, सब में राइट ऑफ करूंगा. राइट ऑफ करके मतलब बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्शन करूंगा. अब मेरा बैलेंस शीट थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि लॉस नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में. अगर इस
इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, शायद ही कुछ शेयर होल्डर, न्यू शेयर होल्डर आ सकते हैं, शायद ही कुछ शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें फिर से मार्केट में वापस आने के लिए एक चांस मिलेगा। हम फिर से अगर मार्केट में आ गए वापस, आपका अमाउंट वापस दे सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपका अमाउंट रिड्यूस करने के लिए, आपका अमाउंट वापस देने के लिए। इज दैट क्लियर? तब शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे? हाँ सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम हाँ नहीं बोलेंगे, आज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम हाँ कहेंगे मतलब हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस करेंगे, शायद एक चांस मिल सकता है हमें वापस अमाउंट मिलने का। अंडरस्टूड? दिस इज अवर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो व्हिच सेक्शंस विल कवर? सेक्शन 61 and 66 of Companies Act 2013. I hope you understood what is internal reconstruction. Internal reconstruction is reconstructing the balance sheet of the company. Okay, how to reconstruct? By reducing its share capital to write off accumulated losses, fictitious assets and intangible assets. There are 5 ways to alter the share capital, and with some balance sheet, with some example, I explained you how to reduce the capital, and reduced capital, how to use it. After reduction, how to reconstruct our balance sheet. ठीक है? Next, we will learn how to pass a journal entries. देखिए, इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। फॉर 5 मार्क्स दे में आस्क पासिंग द जर्नल एंट्रीज, क्लियर? एंड फॉर 10 और 15 मार्क्स दे में आस्क बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर, देयर इज वन क्वेश्चन हियर, आई विल रीड एंड एक्सप्लेन, आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है? बी कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू गो इन फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. The scheme of reconstruction is as follows. So the transactions are related to B Company Limited. Point number A. 10,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up, reduced to 5 each fully paid up. It means B Limited इक्विटी शेयर का जो 10 रुपीज है इसको कन्वर्ट किया है 5 रुपीज में। Understood? From 10 it has reduced 5 and the new price is 5. Clear? The reduced 5 rupees will go to capital reduction and this 5 will go to balance sheet as a new share capital. ठीक है? Point number 2. 5,000 preference shares of rupees 10 each fully paid up, reduced to rupees 5 each paid up. मतलब again same. 10 rupees is the old price, 5 rupees is the new price. There is a reduction of 5 rupees. Again that 5 rupees will go to capital reduction. Next. 100 10% debentures of rupees 500 each. There are 100 10% debentures. The face value is 500 are converted into 500 6% debentures of rupees 50 each. क्या चेंजेस हुआ यहाँ पे? Number of debentures, previously there were 100, now these are 500. Face value was 500 but now face value is only 50 rupees. Interest rate, कूपन रेट भी कह सकते हैं इसको, 10% था, अब ये हो गया 6%. ठीक है? So there is a reduction in equity share capital, there is reduction in preference share capital, also there is reduction in debentures. Clear? Then after reducing these 3 points, यहाँ पे इस तीनों पॉइंट से जो भी कैपिटल रिडक्शन मिलेगा उसको हम यूज करेंगे पॉइंट नंबर डी एंड ई में. ठीक है? देखिए, द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000. विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मतलब लॉस. बी कंपनी लिमिटेड का जो भी लॉस है 25,000 एंड इसका जो गुडविल है 30,000, ये दोनों राइट ऑफ करना है. क्या राइट ऑफ करना है? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल दोनों राइट ऑफ करना है. पॉइंट नंबर ई,
The value of plant and machinery and stock were to be written down by 15,000, 12,500 respectively, along with debit balance of profit and loss and goodwill. We have to write off stock and plant and machinery also. ठीक है, pass the journal entries. चलिए अब हम सीखेंगे किस तरह से हमें journal entries पास करना है. First one, I will erase this part so that we can discuss it properly again. Okay, see here. 10 rupees is old price, 5 rupees is new price. So what is the reduced price? Reduced price is 5. पहले 10 था, अब 5 हो गया. Reduced price is 5 rupees. अब क्या करना है? ओल्ड शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, करेक्ट. ओल्ड शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है. अगर शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है हमें करना है डेबिट. सर डेबिट क्यों करना है? बिकॉज शेयर कैपिटल इज लायबिलिटी. अगर कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो हमें डेबिट करना पड़ेगा. जर्नल एंट्रीज के रूल्स. सो व्हाट आई विल डू हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू. करेक्ट. ओल्ड कितना था? 10,000 शेयर्स इंटू 10 मतलब 1 लाख. ओल्ड अमाउंट इज 10,000 शेयर्स इंटू 10, 1 lakh. What about new? 10,000 shares into 5, 50,000. 1 lakh old share capital हो गया new share capital of 50,000. The difference, यहाँ पे जो difference है remaining amount, that will go to capital reduction account. What is the capital reduction amount? 50,000. Correct. इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल रिड्यूस हो गया. 1 लाख हो गया 50,000 एंड द बैलेंस 50,000 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन. वी हैव टू राइट द नरेशन आल्सो. नरेशन इज वेरी इजी. वॉट एवर वी हैव पास्ड द जर्नल एंट्री, फॉर दैट वी हैव टू राइट अ रीजन. व्हाट इज द रीजन हियर? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each आर रिड्यूस्ड टू 5 each एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. ये लिखना इंपॉर्टेंट है. एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये लिखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट नरेशन हियर क्योंकि स्पेस बहुत कम है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी, इट इज रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सेम मेथड. ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो. ठीक है. हियर एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड अकाउंट डेबिट to preference share capital new. Clear? What is the old amount? 50,000 shares into 10. इसको erase करेंगे. Just 1 minute. Okay. See here. 5,000 shares into 10. Amount is 50,000. 5,000 into 10, 50,000. New price 5,000 into 5 मतलब 25,000. Correct. Then the difference amount we should take it to capital reduction account. Correct. 50,000 minus 25,000 is 25,000. Is that clear? Next, point number 3. Point number 3 is related to debentures. Debentures. 110% debenture. देखिए
Old debenture is 10% debenture, new debenture is 6% debenture. So how to pass the entry? Debenture is also liability only, so old debenture को हमें क्या करना है? डेबिट करना पड़ेगा. Entry will be 10% debentures account debit to 6% debentures. 10% is a old debenture, 6% is a new debenture. Old debenture amount 100 debentures into 500 कितना हुआ अमाउंट? 50,000. 100 debentures into 500, it is old amount. What about new amount? 500 debentures into 50 each, मतलब 25,000. Correct? Old debenture amount 50,000, new debenture amount 25,000. The balance 25,000 we should transfer to capital reduction account. Clear? So this way we have to pass journal entries. Easy है, बहुत easy है. ठीक है, देखो. Old share capital debit, new share capital credit, and if there is any difference amount, transfer it to capital reduction. So as we discussed, point number A, B, C, equity share capital, preference share capital, debenture, all the three are reduced. Okay, and these reduced amount is transferred to capital reduction. The capital reduction we should use it point number D and E to write off profit and loss, goodwill, plant and machinery and stock. ठीक है. देखो reduced amount कितना है हमारे पास? Capital reduction credit 50,000, capital reduction credit 25,000, capital reduction credit 25,000. What is the total amount? 50 plus 25 plus 25, 1 lakh. Now in the next entry, that is last entry, the credited capital reduction we should debit. ये जो credit है capital reduction, अब इसको क्या करना है? यहाँ पे debit करना है. What is the amount? Total amount 1 lakh. Okay, this 1 lakh we should use it for 4 things. First one for profit and loss, second one for goodwill, okay, third one for plant and machinery, and fourth one for stock. Profit and loss 25,000, goodwill 30,000, plant and machinery 15,000, and stock 12,500. Correct? See, 40, 70, 82,500. ये जो टोटल है क्रेडिट कॉलम का, उसका अमाउंट 40, 70, 82,500. So from 1 lakh, 82,500 is reduced. What is remaining? 17,500 is still remaining. This amount we will transfer to capital reserve account. This is our balance amount. This is our balance amount. इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है. क्लियर? Yeah, there are 4 entries we have to pass. Okay, 40s. That's it. Okay, next we will solve one more question. Okay, this is bit different. This question is bit different compared to previous question. थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा. एल एंड कंपनी लिमिटेड सफर्ड हैवी लॉसेस. कंपनी को बहुत हैवी लॉस हो चुका है. अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अडॉप्टेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है. पॉइंट नंबर ए, इन कैंसलेशन ऑफ 80,000 ओल्ड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. यहाँ पे लिखूंगा 80,000 ऑफ ओल्ड ईच. सो व्हाट इज द अमाउंट? 1 lakh. There are 80,000 shares of ₹10 each. So the amount is 8 lakh.
Correct? This is old share capital amount. 10 each, the new shares issued were new equity shares of rupees 10 each to the extent of 4/8 of old shares. Clear? Old shares कितना था? 80,000. 80,000 का 4/8 मतलब 40,000. इसका मतलब 80,000 शेयर ओल्ड शेयर्स थे, उसमें से 40,000 हम न्यू इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए. क्लियर? नेक्स्ट, 4% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द एक्सटेंट ऑफ 3/8 ऑफ ओल्ड शेयर. विच आर द ओल्ड शेयर्स हियर? 80,000. सो क्या हुआ यहाँ पे? 80,000 शेयर्स, इसमें से 3/8 मतलब 30,000 कन्वर्ट हो गया प्रेफरेंस शेयर्स में. अंडरस्टूड? ओवरऑल फंडा इज वेरी सिंपल. देयर आर टोटल 80,000 old shares. From that 40,000 are converted into equity shares, 30,000 are converted into preference shares. Clear? Balance will go to obviously capital reduction. Next point. For the purpose of internal reconstruction, credit balance of general reserve and profit and loss account 10,000 were also applied. Clear? देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट था 1 लाख. 1 लाख में से ये सब हम राइट ऑफ किए थे. उसके बाद भी हमारे पास बैलेंस बचा था 17,500 बचा था, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे. क्लियर? अब क्या कह रहा है, अगर आपको यहाँ पे अमाउंट शॉर्ट पड़ा, अज्यूम दैट हमारे पास यहाँ पे 70,000 है. क्लियर? अगर 70,000 है तो हम ये सब राइट ऑफ नहीं कर सकते. करेक्ट? अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट पड़ा राइट ऑफ करने के लिए, आप हमारे कंपनी के जो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है उसको यूज़ कर सकते हैं. सर प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे यूज़ करोगे? वो तो लॉस में है ना. नो, यहाँ पे प्रॉफिट में है. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 10,000. क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है, सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे लॉस है तो उसको राइट ऑफ करना है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट देयर शुड बी अ लॉस ऑलवेज. 10,000 है, शायद प्रीवियस ईयर में लॉस रहेगा. इज दैट क्लियर? सो फॉर सम रीजन कंपनी वांट्स टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स बैलेंस शीट. ठीक है? सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट शॉर्ट पड़ा सो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज करेंगे. डन? देन द अमाउंट सो अवेलेबल. अमाउंट सो अवेलेबल मतलब कैपिटल रिडक्शन में जो भी अमाउंट है वो अमाउंट we will utilize to write off goodwill and to reduce the value of furniture by 15,000 and debtors by 30,000. हमें 3 अमाउंट माइनस करना है. एक गुडविल, दूसरा फर्नीचर और तीसरा डेटर्स. क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. देयर आर ओनली 3 जर्नल एंट्रीज. Okay, first one, old share capital. Old share capital. Debit. What is the amount? Amount is 8 lakh. For your understanding purpose, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं डिफरेंट इंक से लिखूँगा कैलकुलेशन. How it is 8 lakh, 80,000 shares into rupees 10 each. ठीक है? इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू इक्विटी शेयर्स. सो आई विल क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, कैलकुलेशन आई विल राइट विथ डिफरेंट इंक. 80,000 शेयर्स में से दे हैव कन्वर्टेड 4/8. क्लियर? देन मल्टीप्लाइड विथ फेस वैल्यू दैट इज 10 रुपीज. ओके, 80,000 to 4/8 is 40,000. 40,000 into 10 is 4 lakh. Clear? Next, they have converted into
4% preference share capital, 4% preference share capital. ओल्ड 80,000, देखिए क्या दिया था यहाँ पे 3/8 ऑफ ओल्ड शेयर्स. ओल्ड शेयर्स आर 80,000. ऑफ दैट 3/8 फेस वैल्यू इज अगेन 10. 80,000 into 3/8 is 30,000. 30,000 into 10 is 3 lakh. Correct? From 8 lakh, if you minus 4 lakh and 3 lakh, still we have 1 lakh rupees. This 1 lakh we can transfer to capital reduction account. One lakh we can transfer to capital reduction account. Correct? Then next one. Point number B. For reconstruction we can use general reserve and profit and loss. हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रांजैक्शंस जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे इन एंट्री नंबर 2. सो द एंट्री इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, जनरल रिजर्व 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000. टोटल अमाउंट हमारे पास है 30,000. क्लियर? नाउ राइट ऑफ एंट्री, रिटर्न ऑफ एंट्री पास करना है. कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 1 लाख, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 30,000. सो द टोटल कैपिटल रिडक्शन इज 1,30,000. और थर्ड एंट्री इज रिटर्न ऑफ एंट्री, capital reduction account debit 1,30,000. Okay, from that what are the things we have to reduce? First one, goodwill, sorry, yes, amount 80,000. Then next, furniture 15,000. And the third one, debtors 30,000. Correct? Now total credit side 80,000 plus 15,000 plus 30,000, 1,25,000. Okay, from 1,30,000 if you reduce all the amount, still we have 5,000 balance. This 5,000 balance we will transfer to capital reserve account. Clear? Students, इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा. ठीक है? So these questions they may ask it for 5 marks. For 10 marks questions we will meet in next class. I request students to please share, like and subscribe my SR Classes channel. Thank you. Have a good day.